Good afternoon, people. The last topic that we discussed was disintegration of the Jajmani system. Okay? Then I gave you an assignment which was supposed to be submitted. Majority of you have submitted, but there were some of you who haven't submitted. So now you know it better who hasn't submitted. So just try practicing. See, the purpose was not, I don't know how many of you have done foundation and have realized that knowing the content, getting a direct question, writing the answer, fetching the marks is no acme of skill. This is not the expertise. Expertise is when you didn't know the exact content, you still wrote the content and you managed to get the marks. That is the expertise of the answer writing. Even with respect to optional, there will be certain questions in the paper which you haven't studied. Or maybe it is from the areas which you have prepared, but you exactly don't know the answer to the question which is asked. So in that case, on the spot, how do you do the answer writing? That matters a lot. Okay? So try practicing as many questions which are given to you. Set aside that particular question. There were 3 other questions. Did you try answering that? Okay. Are you revising what we are discussing? Okay. What do you mean by caste system? Anyone? What is the caste system? If I pinpoint and ask, it might look very juvenile. So, what is a caste system? Anyone raise the hand. Give me the perspective. Yes. Absolutely. Ritual and secular space. Brilliant. That is what we mean by caste system. Another, what are the features of caste system? Anyone? What are the features of caste system? बताना है, बताओ. थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा. हाँ. हाँ. Labor. Brilliant. Disabilities. Brilliant. So that is what are the features. Then one of the economic manifestation of ritual hierarchy is known as a Jajmani system. What is a Jajmani system? What do we mean by Jajmani system? कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा, रटना पड़ेगा. और अगर कोई कहता है कि रटना नहीं है, झूठ बोल रहा है आपसे, क्योंकि रटेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे 7.5 मिनट में. व्हाट इज जजमानी सिस्टम? हाँ जी. हाँ. 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 वेरी गुड. Very good. बस goods की जगह grains, rest everything is perfectly fine. So this is what do we mean by Jajmani system. Now, one last question. What are the factors responsible for disintegration of Jajmani system? Anyone? What are the factors which has led to disintegration of Jajmani system? Land reforms, education, migration and urbanization, economic factors like monetization, social reforms. Brilliant. Caste in politics, ठीक है, और social reforms है तो वहीं पे anti Brahmin movements and there can be some legal reforms. Brilliant. See, you need to understand कि याद तो करना पड़ेगा और हो सकता है याद किया भी होगा, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट पूछ रहे हैं तो शायद उतना रिकॉल नहीं हो पा रहा है. इट्स ओके, कीप ऑन रिवाइजिंग. सोने से एक सिंपल सा रूटीन रखो. नो मैटर हाउ मच यू स्टडी ड्यूरिंग द डे टाइम, मेक श्योर दैट बिफोर स्लीपिंग half an hour revise whatever you have studied. During a week, keep one day only for revision. After every 12th or 15th day, plan one entire day again for revision. It's not about how much you have prepared, it is about how much you remember. इसीलिए मैंने एक चीज नोटिस करी और सच में वो वर्क करती है. व्हेन यू हैव लिमिटेड, और इसको लोग बहुत गलत भी समझ जाते हैं, व्हेन यू हैव लिमिटेड नॉलेज, द चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग इज वेरी हाई. क्योंकि जो पता है एटलीस्ट उसको लिख रहे हो.
And when you have too much of knowledge, you don't know what to write and what to apply. So without naming, because I'm waiting for the final result, there was this student. I abhi to kya result aaya hai, so I'm getting a lot of messages and mails. So I still remember that one particular student, and his name was very matlab unique. So the moment you type the name, you will get to know कि वो एक ही इंसान हो सकता है, क्योंकि नाम थोड़ा यूनिक था. तो पता था हो गया है. अभी नीचे ही मैं क्लासेस ले रही थी और प्री का रिजल्ट आया था, एंड आई मेट हिम नीचे ही सीढ़ियों पर, एंड देन ही टोल्ड मी कि मैम हो गया है प्रीलिम्स, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है और बहुत कुछ है मेरे पास नोट्स वगैरह, लेकिन मुझे कंसोलिडेटेड नहीं है, कुछ हो सकता है. मैंने कहा कहाँ के स्टूडेंट हो? उसने बताया जो भी है ये वो, मतलब वो हमारा स्टूडेंट नहीं था. तो उस समय ही सोशियो पेपर 2 वाइंड अप किया था. तो किसी क्लासरूम स्टूडेंट के नोट्स थे, सर ने ही अरेंज करके दिए थे क्लासरूम स्टूडेंट के नोट्स जो आपने. तो मैंने कहा यार देखो ये दे सकती हूँ, इसके अलावा कंसोलिडेट कैसे करोगे ये क्या बताऊं. ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से ये मदद हो सकती है, ये रहे हैंड रिटन नोट्स क्लास के, और ये रहे पिछले 4 साल के विजन के आंसर फॉर्मेट्स टेस्ट सीरीज के. अब बस इसी को कर लो अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है. Qualified means let's wait for the final result. Is that very clear? There have been students who have qualified mains in the very first attempt. And there have been, unfortunately, students who have not made it to the list despite being third, fourth attempt, and they've really worked hard. I will not take that credit from them that they have really, really worked hard. But point ye hai, hard work is not enough. Hard work in the right direction is enough. हम क्या करते हैं, और आपकी क्या बात करता है, खुद वही करके बैठी थी मैं. मुझे ऐसा लगता था बस पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसे भी कर लो. और जब क्वेश्चन आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये मैंने पढ़ा हुआ है, बट एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या है वो ऑन द स्पॉट मुझको याद नहीं आ रहा. तो वो इंट्रो ही नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं टू राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. डू नॉट कमिट द सेम मिस्टेक. तो आई वुड सजेस्ट आप रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ. चाहे आपका जीएस हो, चाहे एसए हो, चाहे ऑप्शनल हो. फर्स्ट यू सी द सिलेबस, देन यू सी द PYQs, and then you prepare your content. That will give you a psychological edge also, because now you know that you have already solved all the PYQs. और PYQs देखो रिपीट तो होगा, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, थीम हो, रिपीट तो होगा. और अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो वो तो ऑप्शनल में भी छोड़ा जा सकता है ना, ऑप्शंस आते हैं ना, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन योर ऑप्शनल पेपर. सो इट मे हैपन, एंड इफ इट इज अ न्यू एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, देन इट इज न्यू, डिफिकल्ट, कंपल्सरी फॉर एवरीवन. तो उसके पीछे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 नंबर, 40 नंबर, उससे ऊपर तो नहीं आएगा ना. बाकी पेपर की तैयारी कर लो. Stop running after content, start consolidating your content. Second important, I don't know whether you guys are realizing or not, आपको ब्रेक दिया जाता है 2 क्लासेस में. वो रीजन ही यही होता है कि जो पिछली क्लास में पढ़ाया है वो याद करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके अगली क्लास में आना है. वो ब्रेक इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि नहीं हमारा मन नहीं है पढ़ाने का, ब्रेक दे दे के पढ़ाएंगे. हमें ज्यादा फायदा है 4 महीने में कोर्स खत्म करके दूसरा बैच लॉन्च करें, फिर उसको खत्म करके तीसरा लॉन्च करें. सोशियो के बहुत बच्चे हैं मार्केट में, आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं. आप ये देख रहे हो इतने दिन लग गए, इतने लेक्चर्स हुए, क्या पेपर 1 तैयार है? क्या पेपर 1 के 10 साल के PYQs हो गए? क्या पेपर 1 से अभी थ्योरी थिंकर पूछूं तो याद है? क्या कर रहे हो यार? फिर वेट कर रहे हो क्या ऑप्शनल पहले खत्म होगा फिर पढ़ेंगे? ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है. मेक इट अ पॉइंट, आपको ब्रेक दिया जा रहा है, यू विल रिवाइज योर पेपर 2 जो क्लास में चल रहा है. एट द सेम टाइम यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग 1 चैप्टर फ्रॉम पेपर 1. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चन. अभी हम हैं यहां पर. सो whenever sir will come back and resume the classes, जो भी आपका पिछले पढ़े हुए के डाउट्स हैं, जो भी आपने आंसर राइटिंग करी है, go get that evaluated and then move ahead. And same goes here. Is that very clear? So next time जब मैं क्लास में एंटर करूं, and if I ask you the question, आपकी सारी definitions पर्सपेक्टिव टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं वर्कबुक, नेक्स्ट क्लास में आपका वर्कबुक टाइप टेस्ट दूंगी. एक आंसर नहीं लिखवाऊंगी,
डेफिनेशंस पे, थिंकर के पर्सपेक्टिव पे वो वाला टेस्ट दूंगी, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा और बिना पीछे देखे आपको आंसर करना है। मैं पहले से बता रही हूँ, सरप्राइज नहीं होगा। So next class mein, this would be your workbook test. Please revise all the 3 lectures which I have taught before that. Is that clear? Let's start. So we had discussed Jajmani system and the disintegration. By the way, this time socio ka result theek hai, as far as mains are concerned. So Jajmani system mein, let's write down the perspective. The last topic we were doing disintegration of Jajmani system. Disintegration of Jajmani system pe hi I am giving you the perspective. For example, the first perspective is M.N. Srinivas. M.N. Srinivas says, due to westernization and occupational diversification, it led to weakening of traditional Jajmani linkages. Similarly, according to Andre Bete, due to land reforms, lower caste acquired ownership of land and hence dependence on Jajmans declined. Third, Juan Mencher disintegration of Jajmani relations has been partial and uneven. Last, according to Surendra Jodhka, although Jajmani linkages had weakened, but network based on caste still played an important role in recruitment, especially in rural areas. So I'll just read it out for you. As far as Jajmani's disintegration is concerned, we already know the factors. You've only told me, right?
But then there are some perspectives which are giving credibility to our argument. For example, M.N. Srinivas says there is education system which is emerging. There is new value system which is emerging. Technology, transport, if you remember, we wrote those points in the economic factors. Because of this and occupational diversification, now that traditional Jajmani linkage is getting weak. Now no longer caste is associated with your occupation. Jajmani system is getting break. So this is nothing but M.N. Srinivas. If you remember land reforms, we discussed about dominant caste very briefly. We also talked about Bhudan movement, that is land redistribution, because of which now lower caste is also getting ownership over land. तो वो जो एक traditional service exchange था ना based on caste, that is getting diluted. This is nothing but Andre Bete's perspective. Similarly, Joan Mencher ने कहा disintegration हो रहा है लेकिन partial और uneven है. कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा. आज भी देखने को मिलता है, जैसे सर्वे, इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम आपको एक डेटा भी दिया था, एक्शन एड एनजीओ, कि आज भी कास्ट के बेसिस पे द वर्क इज बीइंग अलॉटेड. यानी आज भी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इज स्टिल persisting. So that is why it is said that disintegration has happened, but partial and uneven. Then Surendra Jotka. Although Jajmani linkages have weakened, but network based on caste still plays an important role in recruitment, especially in rural areas. Is it making sense? ठीक है. Network based on caste की जगह caste network लिखना वो better. It will help you save on 2 words and space also. वो मुझे लिखने के बाद realize हुआ. So network based on caste की जगह we could have written caste network still plays an important role. Is this clear for everyone? ठीक है. Now we'll take up some examples where we'll prove that Jajmani system still persists. According to Action Aid NGO survey, in 25% of surveyed villages, Dalits are not allowed to work as casual labor on land. Similarly, according to National Sample Survey Organization, only 9% Dalits have more than 2 hectares of land. Rest are working in capacity of labor. Similarly, according to CSDS survey, इतना लिखो. Online students, in your class portal, you might be having access to assignment submission. Na? Can you just write on the... Achha, you've written? How much pages we have to write in a 10 or a 15 marker? We don't get a 15 marker in socio. It is 10 and a 20 marker.
You have to be very careful with respect to 20 markers. UPSC is very smart. Sometimes they give you 4 sides. Sometimes they give you 3 sides. Sometimes they give 4 sides in paper 1 and 3 sides in paper 2. So when you enter your mains examination hall, the first thing you will check how many pages they have allotted. Because this time for both paper 1 and paper 2, there were 3 pages. So you have to be very careful. अगर पहले check नहीं करोगे और 4 pages के हिसाब से आंसर लिखना शुरू कर दिया तो पता चलेगा 3 ही pages हैं, और 3 pages के हिसाब से आंसर लिखा और पता चला 4 pages हैं, तो वो भी अच्छा impression नहीं देगा. So be very careful. लेकिन as of now you will practice keeping in mind 3 sides. So 3 sides are given as far as 20 marker is concerned, and exactly 1.5 page you will use to write a 10 marker. They will give you 2 sides, but you will use 1.5 sides. That is how we practice. ठीक है? कितना इतना लिखा? इसी में लिखो. According to CSDS survey, caste networks still dominate recruitment in rural informal economy. CSDS का full form होता है Center for Study of Developing Societies. Just for the information, CSDS is Center for the Study of Developing Societies. Now write the flip side examples. Counter examples. Give the heading counter examples. Counter examples. हाँ Siddhant, absolutely. Jajmani system disintegration also increases incidences of violence against Dalit. It's not exact, हाँ कह सकते हैं, because it is believed that the caste system में the hegemony of the upper caste is getting challenged. That may be the reason. Write down इसी में. In Haryana, Dalits refused to work. In Haryana, Dalit refused to work in upper caste field. After caste-based violence. In 2010. Next. Similar boycott of upper caste households by Dalit agricultural laborers in Tamil Nadu in 2018. Next, एक और example लिखो. In several villages of Bihar, Dalit laborers refused to work under Jajmani norms, and demanded daily wages under MG Narega. Demanded daily wages under MG Narega. Clear hai? So now if you get a question on disintegration, do we have a perspective to support the argument? Do we have examples for the motion and against the motion? Somewhere it is getting disintegrated, but in some places it is not getting disintegrated. Some remnants are still to be found.
Is this clear? ठीक है. So last topic as far as Jajmani, that is criticism. Louis Dumont has criticized that in Jajmani system, there is over romanticization of this mutuality. हर बात में विलियम वाइजर कहते थे ना, म्यूचुअल बेनिफिट्स है, रेसिप्रोकल बेनिफिट्स हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज फंक्शन है, इट इज बेनिफिटिंग बोथ जजमान एंड कमीन. तो इस पे ड्यूमो ने कहा इतना रोमांटिसाइज मत करो क्योंकि ये पूरा सच नहीं है. देयर इज म्यूचुअल बेनिफिट बट इट इज नॉट इक्वल इन नेचर. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है. सिमिलरली Joan Mencher, it did not account for economic exploitation and caste subjugation. If you remember, we did a perspective of Joan Mencher. हमने दो ही पर्सपेक्टिव करे थे मेन, एक विलियम वाइजर एंड सेकंड वाज जोआन मेंचर. अब विलियम वाइजर थोड़ी ना क्रिटिसाइज करेगा, वो तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है. दे आर लुकिंग एट जजमानी सिस्टम फ्रॉम अ पॉजिटिव lens. It was Joan Mencher who criticized that what you have not taken into consideration is the economic exploitation and caste-based discrimination or subjugation. Gail Omvedith. It overlooked caste-based violence. It overlooked caste-based violence. There are two sections. One is Jajman, other is Kameen. There is hereditary exchange of service. What if it so happens that among the Kameen, there is someone who doesn't want to do the same occupation and wants to do something else? But this system is so rigid that as a result, the person is either met with social ostracization, boycott, or violence, and no one talked about it. So Gail Omvedith said that this perspective on Jajmani system was presented in such a positive manner that it overlooked the caste-based violence. Next. Virginius Khakha, it failed to account for external market relations which constantly challenged Jajmani system. इफ यू रिमेंबर, जब हम जोआन मेंचर कर रहे थे तो हमने जोआन मेंचर का क्रिटिक लिखा था. उसमें हमने दो पर्सपेक्टिव लिखे थे, एक एंड्रे बेते का और दूसरा वर्जीनियस खाखा का. दैट यू हैव अंडर एस्टिमेटेड द एजेंसी ऑफ कमीन्स, their power to resist the system, to bring about change, because there were many who were migrating to some other region. तो एक्सटर्नल मार्केट के साथ जो रिलेशंस थे उसके लिए अकाउंट नहीं किया था जजमानी सिस्टम ने, एंड दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच वाज कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग जजमानी सिस्टम एंड अल्टीमेटली लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन. इज दैट क्लियर? और एक लास्ट लिखेंगे,
Malcolm Marriott. It did not emphasize upon the regional variation with respect to Jajmani system. Again, make a revisit जो अभी point दिया, Andre Bete ने यही कहा था ना, in some areas there were more negotiation powers among the Kamins. That means with respect to Jajmani system there was regional variation. You cannot view Jajmani system from the same lens. In some areas there is better bargaining, in some areas there is less bargaining, in some area it is more flexible, in some areas it is very rigid. So Malcolm Marriott says you did not take into account the regional variation. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, अब बहुत डालने का मन हो तो एक और, जब इतना बात कर ही रहे तो एक फेमिनिस्ट भी डाल दो। हम लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखवा रही। याद है लीला दुबे का पर्सपेक्टिव लिखा था, उमा चक्रवर्ती का पर्सपेक्टिव लिखा था, दैट विद इन जजमानी सिस्टम ऑल्सो यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ जेंडर्ड लेंस, that how women Kamins, they are the major sufferers among all the other sections of Kamins. Is that very clear? ठीक है, अब रुको, अब जाके जजमानी खत्म हुआ, आपने पूरा जजमानी घर जाके पढ़ा, रिवाइज किया। अब आप एक सिंगल शीट उठाएंगे और सिंगल शीट में आप सेंटर पे लिखेंगे। अब आप लिखने नहीं बैठेगा, अभी समझिए, आप इसको नहीं लिखना है। तो आपने सेंटर पे जजमानी लिखा, आप एक बार पूरा रिवाइज कर चुके हो, आपने पढ़ लिया है। सबसे पहली चीज आपके मन में आएगा कि जजमानी का क्या कॉन्सेप्ट है। वहीं पर आप लिखना, एक जजमान है, एक कमीन है, हेरिडिटरी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है, क्या सर्विस दी और उसके बदले में क्या मिला। और फिर यहीं पर आप डाल देना, आई विल एड पर्सपेक्टिव ऑफ विलियम वाइजर। फिर उसके बाद मैं जजमानी में बात करूंगी जजमानी के फीचर्स की, और हमने जो फीचर्स डिस्कस करे हैं आप वहां पर लिख लीजिए। उसके बाद हम यहां बात करेंगे पर्सपेक्टिव की, और पर्सपेक्टिव क्योंकि हमने पढ़ा है वाइजर और दूसरी तरफ हमने पढ़ा है मेंचर, और इसको रटो नहीं, समझो कैसे। वाइजर हमारा फंक्शनलिस्ट है, मेंचर हमारा मार्क्सिस्ट है, तो ये पॉजिटिव बोलेगा और ये नेगेटिव बोलेगी, जुआन मेंचर बोलेगी। सो ये हम ध्यान रखेंगे। ये भी एक बैकफायर कर गया था, इंटरव्यू में रजनी कोठारी मेंशन करा और उसके आगे लगा दिया शी इज अ फिनोमिनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये नहीं करेंगे, रजनी कोठारी ही है, शी नहीं, जुआन मेंचर शी है, ठीक है। सो हम ये करेंगे फंक्शनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, और फिर इनका पर्सपेक्टिव। यहीं पर रिवाइज करते वक्त सोचोगे कि अगर वाइजर लिख रहे हैं तो पहले तो वाइजर का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, फिर वाइजर ने किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करी है वो पता होना चाहिए, फिर उसके क्या कोर आइडियाज हैं और उसका क्या क्रिटिसिज्म है। हमने 1 पेजर नोट तैयार करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, डिसइंटीग्रेशन हो गया है। तो कोई भी चीज होती है तो उसके लिए फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास थिंकर्स होने चाहिए, और फिर एग्जाम्पल्स होने चाहिए फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, एंड फाइनली ओवरऑल टॉपिक का। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, कि पूरा पढ़ने के बाद एक खाली पेज लेंगे और ऐसे एक्टिव रिकॉल करेंगे। इसमें मैं गारंटी से कह रही हूं पहली बार जब करोगे सिर्फ 50% याद आएगा, बाकी 50% याद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज कर लो और फिर एक सिंगल शीट उठाओ और फिर बनाओ। फिर लगेगा 75% तक याद आ गया लेकिन 25 अभी भी मिसिंग है, फिर एक पेज उठाओ और ऐसे बनाओ। इज दैट वेरी क्लियर? और हफ्ते भर बाद फिर याद नहीं होगा तो फिर एक पेज उठाया जाएगा। लेकिन इसका एक डिफरेंस बताती हूँ, पहली बार करोगे आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन जब वो 3-4 बार कर चुके हो उसके बाद घड़ी देख के 5 मिनट लगेंगे और एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इज दिस वेरी क्लियर? ऑप्शनल है, 500 नंबर दाव पे लगे हैं, कोई मजाक नहीं, ऐसे पढ़ेंगे। इज दिस वेरी क्लियर? जजमानी सिस्टम समझ आया कैसे रिवाइज करना है 1 पेजर नोट में? आगे बढ़ूं? ठीक, नेक्स्ट, वर्ण वर्सेस जाति। अब इसको समझते हैं और आज फुल एंड फाइनल एक बार समझ ही लेते हैं दैट वर्ण और जाति में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हाउ इट इज ऑपरेटिंग। नाउ डोंट राइट एनीथिंग, जो भी लिखना है मैं बता दूंगी, अभी सिर्फ समझते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम there is a difference between these two concepts that was highlighted by Emily Senart.
सेनाट ने पहली बार आइडेंटिफाई करा दैट वर्ण एंड जाति आर डिफरेंट। तो फिर यहां पर पिक्चर में आते हैं एमएन श्रीनिवास, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये वर्ण एग्जैक्टली है क्या। बट अभी एमएन श्रीनिवास को किनारे रखते हैं, अभी समझते हैं वर्ण क्या है। वर्ण इन सिंपल वर्ड, डू नॉट राइट एनीथिंग। वर्ण इन सिंपल वर्ड इज अ बुक व्यू, बुक व्यू टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम। बुक व्यू मतलब the view which is written in your books, it is written in your scriptures. So whether it is Ved, Puran, Dharm Shastra, Manusmriti, so they are nothing but your scriptures. So the version of caste which is written in scriptures is known as Varn. It is something which is existing on a pan-Indian basis. कोई इस स्ट्रक्चर को डिनाई नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि पहले क्षत्रिय आते हैं फिर ब्राह्मण। दिस इज समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग ऑन अ पैन इंडियन बेसिस। यू हैव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड लेटर व्हाट वाज एडेड इन दिस लिस्ट वाज अनटचेबल्स। सो इट इज अ पैन इंडियन फ्रेमवर्क एंड देयर वाज अ फिक्स्ड नंबर, दैट इज 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. But when I add untouchables, then it becomes 5. So this is my untouchables. And it was said that ये जो arrangement है, this is fixed. And fixed means that there is no scope of mobility. And what is the basis of this arrangement? This is ritual. Why ritual? Because it is written in your scriptures. And if it is ritual, that means it does not reflect political and economic realities. So this is one. ये डिस्टॉर्शन है लिव्ड रियलिटी का, क्योंकि लिव्ड रियलिटी इससे बहुत अलग है. तो फिर पूछा गया कि लिव्ड रियलिटी क्या है. तो फिर आया दैट दिस जाति इज नथिंग बट अ फील्ड व्यू. फील्ड व्यू का मतलब होता है समथिंग विच इज नोन एज एन एम्पेरिकल रियलिटी. और ये हमें कैसे पता चलती है? जब हम करते हैं विलेज की स्टडीज, तब हमको जो सच पता चलता है, द ग्राउंड रियलिटी, इट इज नोन एज जाति मॉडल. अब ये आया कैसे? एंड इट इज सेड इट इज थाउजेंड्स इन नंबर. इनन्यूमरेबल भी लिख सकते थे, थाउजेंड्स इन नंबर. ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये 4 या 5 नहीं है, दे आर थाउजेंड्स. अब समझते हैं ये कैसे आया. वंस एंड फॉर ऑल, एक वर्ण उठाते हैं. ये वर्ण है, क्लियर है? ठीक. सपोज करो ये ब्राह्मण्स यहां रहते थे, ये कस्टम्स फॉलो करते थे, और ये टेंपल में रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे. दे वर डूइंग द प्रीस्टली वर्क. फिर कुछ दिनों बाद इनको लगा लेट्स मूव टू डिफरेंट रीजन्स. तो ये माइग्रेट करे, तो कुछ लोग इसमें रीजन 1 चले गए, कुछ लोग रीजन 2 चले गए, कुछ लोग रीजन 3 में चले गए. अब क्या हुआ? ज्योग्राफिकल फैक्टर, डू यू अग्री, डिटरमाइंस व्हाट यू ईट. Geography determines what you wear. Geography determines what would be your way of life. तो क्या तीनों ब्राह्मण से, पर तीनों के कस्टम्स में चेंज आ जाएगा? Because they have migrated to different areas. So now what they are practicing is their own local customs, local dietary patterns, local dressing style. ये बदली सबकी, ठीक है. और अब ये जिस रीजन में दे माइग्रेटेड, अब जरूरी थोड़ी ना है दैट एवरीवेयर दे आर डूइंग द जॉब ऑफ टेंपल प्रीस्ट. लेट अस से दिस सेक्शन व्हिच माइग्रेटेड हियर, दे गॉट द जॉब ऑफ अ टीचर. In this region, whoever migrated, king was very happy. King said, why don't you become my advisor? And in this region, the king was so happy that he gave the land. So despite being Brahmins, they became
तभी तो भूमियार आए, कायस्थ आए, और यही कंफ्यूजन चलता है कि वो 4 वर्ण में आते कहां हैं। कोई कहेगा कि कायस्थ वैश्य कम्युनिटी से थोड़ा सा ऊपर है, कहीं कहीं कायस्थ क्षत्रिय स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, कहीं कहीं कायस्थ ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के बीच में आ रहे हैं, और कहीं कहीं तो कायस्थ ब्राह्मण ही स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्टेट वेरिएशन भी है। ऐसे ही थोड़ी ना ओबीसी लिस्ट, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ओबीसी लिस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज ऑपरेटिंग? कहीं कहीं बनिया आप बोलोगे कि दे आर इन जनरल कैटेगरी, वहीं पर अगर आप गुजरात चले जाओ, आप झारखंड चले जाओ, तो वहीं पर ओबीसी का कोटा लगता है, और यहीं आप यूपी में हो तो नहीं लगता है। अरे यार तो गलत हो गया यार, ये तो यूपी की जगह अगर झारखंड हुआ होता तो कोटा लग जाता। चल गया, एनीवे। सो डिड यू गेट माय पॉइंट? मुद्दे क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब क्या हुआ, इनका कस्टम भी बदला, इनकी ऑक्यूपेशन भी बदली। अब यार उस जमाने में ना सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, वो अपन को पता है, वो एप्स, वो टिंडर विंडर वो सब नहीं था, इंस्टा वगैरह स्नैपचैट वगैरह नहीं था, तो लोग आपस में मिलते कैसे? तो फिर क्या हुआ कि वहीं पर जो लोग सेटल्ड थे तो आपस में ही शादी कर ली। तो जब उन्होंने साथ में विद इन द सेम ग्रुप दे स्टार्टेड गेटिंग मैरिड, तो अब ये पूरा ग्रुप क्रिस्टलाइज्ड हो गया, एंड विद इन द सेम ब्राह्मण्स यू गेट ब्राह्मण। तो एक वर्ण में से जाति निकल आई। डिड यू गेट द पॉइंट? अब यहीं पे रुको, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूं। ये हुआ, तो ये तो अभी हम यहां डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि इनको आपस में ही अपने ग्रुप में शादी करनी थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि हम प्रैक्टिस करते हैं जिसको कहते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती। अब सेम गोत्र में कर नहीं सकते, सेम कास्ट में कोई मिल नहीं रहा, तो थोड़ा इंटरकास्ट फिर करना पड़ा। तो इन्होंने लेटर से थोड़ा सा चेंज करके इंटरकास्ट कर ली। तो फिर इन लोगों ने, बाकी जो बचे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो प्योरिटी नहीं रही, क्योंकि तुमने तो इंटरकास्ट कर ली। तो फिर इसमें से एक नया सेक्शन निकला, B1, और उसका, डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, अभी रुको ना, 3000 बनाए तो फिर ये बने। अब इनमें क्या हुआ, बड़ा स्ट्रिक्ट था प्योरिटी पोल्यूशन का रूल, कि ये प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने स्ट्रिक्टली रिचुअल्स फॉलो नहीं करे, तो बाकियों ने कहा सिंस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द रिचुअल्स सिंसियरली, वी बोथ आर नॉट एट द सेम लेवल। तो फिर इसमें से एक और निकल गए। फिर इन्हीं में से कुछ थे जिन्होंने कहा नो नो, वी आर प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स वेरी स्ट्रिंजेंटली, सो वी शुड हैव द अपर स्टेटस, वी आर नॉट लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल। और फिर ऐसे चलते गए, चलते गए, चलते गए, और 3000 हो गए 4 के। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इज वर्किंग? अभी सब थ्योरी के फॉर्म में लिखवाऊंगी, कहानी समझ आई कि नहीं आई? ये समझ तो आया कि वर्ण में से जाति कैसे बना, ठीक है? अब लिखते हैं, राइट। जस्ट राइट। कास्ट एंड वर्ण, यार बफरिंग हो रही है शायद। कास्ट एंड वर्ण are two separate, caste and varn are two separate concepts. Caste and varn are two separate concepts, full stop. Senat for the very first, Senat
for the first time brought out the conceptual difference between these two terms. Full stop. Key attributes of Varn. Give the heading. Key attributes of Varn. Key attributes of Varn. ब्रैकेट में लिखना MN Srinivas. Key attributes of Varn in the bracket MN Srinivas. Within that, right? First, single pan-India hierarchy. Single pan-India hierarchy. Just wait. Online people, now is it fine or is it still buffering? It's fine. People, it's fine from our side. Give the heading, leave 2 lines just. I've not dictated much. Just leave 2 lines and write key attributes of Varn in the bracket MN Srinivas. And the first point is single pan-Indian hierarchy. Second point, only 4 Varn. Only 4 Varn in the bracket. 5 if untouchables included. 5 if untouchables included. Next, fixed hierarchy. Fixed hierarchy, third point, fixed hierarchy. And fourth, primarily ritual in nature. Primarily ritual in nature. Primarily ritual in nature, not reflecting economic or political realities. Not reflecting economic or political realities. Full stop. Next. On the other hand, Jati is a dynamic reality. On the other hand, Jati is a dynamic reality, comma, flexible, comma, variation from one region to another. Variation from one region to another. इसी में लिखेंगे. Change the paragraph or point, whatever you are writing in. Jati did not come from religious text. Jati did not come from the religious text. Like Varn. But developed naturally over time. But developed naturally over time due to pointers में लिखना. First, occupation. Second, who they marry. And third, local customs. So just hold. Can I say Varn is theoretical and ideal, whereas Jati is practical and real? Okay. Next, give the heading, subheading. Why Varn model
distorts reality. Why Vर्ण model distorts reality? Within that, right? M.N. Srinivas, comma, Dipankar Gupta argues that Vर्ण model offers oversimplified, comma, Brahmanical idealization, oversimplified, comma, Brahmanical idealization that is far removed from empirical reality. Full stop. Change and write. Change the para and write. Caste system is an all India phenomenon. Caste system is an all India phenomenon of which Vर्ण model is a macro structural scheme. Underline this. Is a macro structural scheme. According to Shu, Vर्ण is a conceptual scheme. Vर्ण is a conceptual scheme, whereas caste is a description of real situation. Whereas caste is a description of real situation. Just hold. In the last class, after the class, a student asked me a question that I have not understood ritual and secular. Okay? I use the term ritual and secular. Now just hold. Ritual, I said, is based on scriptures, and secular, what I mean is based on your achievement. Secular space means social space, political space, and economic space. Further example dena ho, let us say education, let us say political power, let us say jobs. So Vर्ण says that both ritual and secular hierarchy, it coincides. Vर्ण says if you belong to X Vर्ण, whatever is your ritual status, the similar would be your secular status. So if ritually you are higher, you will be undoubtedly secularly higher. This is what Vर्ण says, that this inequality is cumulative. They are merging. But ये real थोड़ी ना है. Real में there is a possibility ना कि ritual status तो बहुत ज़्यादा है, but maybe this person is unemployed. So economic status is not high. Similarly, if I take example of Dalits, so ritual status is low, but it may happen na that you have example of Dalit capitalist, or there can be a Dalit IAS officer, or there can be a Dalit. तो क्या आप देख रहे हो रियलिटी में रिचुअल और सेक्युलर हायरार्की कन्वर्ज नहीं हो रही. यही कहा एमएन श्रीनिवास ने कि Varna has distorted the reality because Varna says both the hierarchies are
merging, but in reality, it is not necessary. Is it making sense? According to Verne, secular and ritual hierarchies converge. According to Verne, secular and ritual hierarchies converge. But according to Srinivas, अब अगली बार से जब भी एम श्रीनिवास बोलूंगी तो according to Srinivas, a caste can be ritually high. A caste can be ritually high, but lower in local caste hierarchy. Lower in local caste hierarchy. Lower in local caste hierarchy. अब देखो एम एन श्रीनिवास ऐसी बात क्यों करे? क्योंकि उन्होंने क्या कंडक्ट करी थी? फील्ड स्टडी, विलेज स्टडी, एंड वन ऑफ द फेमस विलेज स्टडी अभी हम पढ़ेंगे. एम एन श्रीनिवास वॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामपुरा. एंड रामपुरा में उन्होंने देखा दैट द ब्राह्मण्स दे वर हैविंग रिचुअल सुपीरियोरिटी, लेकिन जो वहां पे ओकलिगास थे, they were dominating local politics. So ritual hierarchy was diverging from secular hierarchy. तो ये एक एग्जाम्पल डालो. एग्जाम्पल, in Rampura, Brahmins had ritual superiority. Brahmins had ritual superiority. But Okaligas controlled the local politics and economy. Controlled local politics and economy. Local politics and economy. Hence, ritual and secular hierarchy diverged. Hence, ritual and secular hierarchy diverged. Just wait.
Exam mein, if we get the question, this is how we'll write the answer. That to what extent or how jati is different from varn, or how varn has distorted the picture of reality. So you will give the arguments that we have discussed, but this is how it is going to be presented. That how varn is different from jati. It is different with respect to the origin, it is different with respect to the scope, it is different with respect to the numbers, it is different with respect to nature, the basis of division, as well as the flexibility or mobility. So these are the aspects based on which varn is different from jati. And then you will give the examples which we have discussed. And this is how the answer starts. Ab aa jaye varn aur jati par. So you will say how varn and jati are two different concepts, and the difference was for the first time highlighted by Sinat. How they are different, you make this diagram and then do the analysis that based on this difference, M.N. Srinivas and Dipankar Gupta has highlighted how varn has distorted the picture of reality. Because varn is an oversimplified Brahmanical idealization version, whereas jati is the lived reality. For example, in context of Rampura village. Is the answer ready now? Is it making sense? ठीक है. और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है. जो हमने पढ़ा है बस उसको टेबल में लिखा है. एक और चीज है, ऐसे लिखने का एक फायदा होता है, वो पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने पड़ते. दूसरा, इंग्लिश का चिक चिक नहीं रहती. वो भी एक अपने आप में भसड़ है. आधे इंजीनियर्स हैं जो सोशियो लेके बैठते हैं और मैथ्स वाले पढ़ाते हैं सोशियो. So the point here is this is how we need to understand. In a 10 marker, what paragraph writing you will do? Just write the intro and the conclusion. गुस्सा हो रहे हैं ऑनलाइन वाले. अरे यार सच्ची, यहाँ टीम बोल रही है ठीक चल रहा है, कैसे बताएं. रिफ्रेश वगैरह करने से कर तो रहे होंगे, आई एम श्योर. हाँ, we have conveyed it to the team, they are looking into it. I'll read. Natural evolution over a period of time based on occupation, kinship, and customs. Kinship, yeah, the relations either based on blood or marriage. So kinship, customs. हाँ, ये कहते हैं कि जाति was in both ritual and secular space, because even jati also was based on purity and pollution. The ritual aspect tha, but along with ritual there was also secular. For example, let us say because of reservation, youth from Dalit community got access to higher education, job, and everything, but that does not mean that separation of contact is not existing. There was an unfortunate incident where a peon refused to hand over the file to the Dalit IS because it was believed that peon was from the so-called upper caste and there has to be a separation of contact.
So ritual is still there in jati, but along with ritual there is secular. So let us put it this way. Where? Varna doesn't talk about secular. Varna says ritual and secular is the same thing. If you are ritually higher, you are by default higher in the secular space. So wo jo difference tha na, that never existed at the time of Varna. That was introduced only by M.N. Srinivas when he did the field study. क्या हुआ? अच्छा, आगे बढ़े, ठीक है? I think in first lecture, I was talking about endogamy, commensality, occupational division of labor. And I said that caste rules are very rigid. So there exist caste councils to observe that all the rules are followed. Just remember, rules are not applied at the level of Varna. They are applied at the level of subcaste. First class में मैंने बताया था, this is my Varna. Within Varna, what you have a jati. Within this, you have a subjati. Here you have a gotra, and within gotra, you have your surname or kul, whatever. ठीक है? So जो वो rigid rules है ना, endogamy, separation of contact, commensality, it is applied here. मतलब within Varna also you can't marry. Within jati also you can't marry. There has to be at the level of subjati. So what you are practicing is at the level of subjati, we are practicing endogamy, and at the level of gotra, what we are practicing is exogamy. Is that very clear? Since we are talking about this, just give a brief heading. एक बार करके खत्म करते हैं. Give the heading. Gotra. It is defined as clan or lineage. It is referred as a system in Hindu society meant to trace the origins. We inherit our gotra from our father. कहाँ गए? Referred as. We follow 4-clan rule with respect to marriage. अच्छा, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. जब फर्स्ट क्लास में वी वर स्टडिंग एंडोगेमी. एंडोगेमी मतलब मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट. Pratiloma and Anuloma are the exceptions, because both are the examples of exogamous marriage, where you are marrying outside your caste. So endogamy is marrying within your caste, exogamy means outside. For example, Anuloma or Pratiloma, where Anuloma is still tolerated, Pratiloma is absolutely forbidden. Is that clear? So with respect to Gotra, we follow 4-clan rule with respect to marriage. That is, we cannot marry within father's gotra, mother's gotra,
paternal grandmother gotra and maternal grandmother's gotra. सिंपल भाषा, दादी के गोत्र, नानी का गोत्र, मम्मी का और पापा का. तो 4 क्लैन रूल फॉलो होता है that within these गोत्र we cannot marry because it is believed it is close relations. ठीक है. Purpose. To ensure genetic diversity and to widen the social network. आपने गोत्र का रिलीजियस रोल देखा है? जब घर में कोई पूजा होती है, हवन होता है, तो गोत्र पूछा जाता है ना? शादी होती है तो गोत्र पूछा जाता है, कोई भी सेरेमनी होती है तो गोत्र पूछा जाता है. फिर कैसी लोग होते हैं जो आजकल की जनरेशन है, गोत्र ही नहीं पता, तो फिर पंडित जी अपने हिसाब से एक कॉमन गोत्र बता देते हैं कि चलो ये पूजा में तो यूज करते ही है ना, तो इट हैज अ रिलीजियस रोल. इट इज यूज्ड और मेंशन्ड ड्यूरिंग रिचुअल्स. Current status, significance has diluted to certain extent in urban areas, but it is relevant in rural areas. And finally, any controversy, we can link it with honor killing, khap panchayats, etc. Do you understand now what is Gotra? Gotra is our lineage from where we are tracing our origin. ठीक है? जैसे कोई कहता है हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो ये माना जाता है we are descendants of ऋषि भारद्वाज. So that is how Gotra means, clan or lineage. ठीक है? And whatever Gotra that you have, it is inherited from your father's side. And Gotra is significant in our society as far as marriage is concerned. Because in our society, marrying within your own Gotra, in fact, 4 clan rule is observed. Gotra is everywhere. Gotra is tracing your lineage. Can there exist any community without a lineage? So that is there. Anuloma and Pratiloma is hypergamy and hypogamy. Asking or telling? सही है, यही है. Oh Baba. Can we say Varna serves as a base on which caste as a superstructure is built? जबरदस्ती मार्क्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन बेस और फाइन द सिस्टम हैज बिल्ट वो मैं मान लूंगी, लेकिन यहाँ पे जो सबस्ट्रक्चर ये वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, मार्क्स नहीं लगाएंगे. इज इट सपिंदा रिलेशन? व्हाट इज सपिंदा रिलेशन? सा पिंड together and we are offering rice balls. That means we are tracing our ancestry to the same
एंड सिस्टर, तो फिर हम कहा जाता है कि सपिंद हैं एक दूसरे के, एंड मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन सपिंद रिलेशन. इज दैट क्लियर? नाउ लिसन केयरफुली. इज गोत्र एक्सोगेमी barred in our society legally? लीगली सपिंद रिलेशन है. गोत्र एक्सोगेमी प्रैक्टिस की जा सकती है प्रोवाइडेड इट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग द रूल्स ऑफ सपिंद मैरिज. मतलब 5 generations on your father's side and 3 generations on your mother's side you can't marry. उसके बाद if you are in that गोत्र एक्सोगेमी का ambit, even then legally you can marry, not socially. ये एक गोत्र है, ठीक है. हम एक कम्युनिटी उठाते हैं, वैश्य वर्ण, वैश्य में से आए अग्रवाल, अग्रवाल में से लेट अस से यू हैव एरन गोत्र. अब इस एरन गोत्र में बहुत सारे लोग हैं, तो सोशली ये कहा जाएगा कि अगर आप सब इस गोत्र के हैं तो आप आपस में शादी नहीं कर सकते. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर इन दिस, ठीक है. पर लॉ कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये अलाउड है प्रोवाइडेड इट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग द सपिंदा रूल्स. तो क्या प्रोहिबिटेड है? सपिंदा मैरिज लीगली. सोशली क्या प्रोहिबिटेड है? गोत्र एंडोगेमी. आपको क्या मैरी करना पड़ेगा? आउटसाइड योर गोत्र. और सपिंदा के रूल्स क्या है? 5 generations on your father's side and 3 generations on your mother's side. इसमें शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रिलेशंस हो जाते हैं. तो ये प्रोहिबिटेड है लीगली. पर क्या गोत्र एंडोगेमी लीगली प्रोहिबिटेड है? नहीं, सोशली है. ऑनर किलिंग हो जाती है. सो नहीं, मैं बात बता रही हूं. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? कस्टम वेरी करते हैं ना यार. नहीं, सी लॉ वहां नहीं लगता जहां कस्टमरी प्रैक्टिसेस आ जाते हैं. तो जो लॉ है वो ये कहता है कि सपिंद मैरिज नॉट अलाउड अंटिल एंड अनलेस दैट अलायंस इज कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ योर कम्युनिटी. जैसे साउथ में बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां आप मामा से शादी कर सकते हो, लेकिन वो सपिंद रूल के अगेंस्ट हो जाएगा. लेकिन साउथ इंडिया में अलाउड है. तो वो एक्ट का जो रूल है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसका प्रोविजन कहता है कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द सपिंद रूल्स प्रोवाइडेड इट इज एन एस्टैब्लिश कस्टमरी प्रैक्टिस. तो अगर आपके कस्टम की वो प्रैक्टिस है आपकी कम्युनिटी की, देन इट कैन बी फॉलोड. इज दैट क्लियर? इज इट मेकिंग? वो किसी ने सवाल पूछा था इसलिए मैं आंसर कर रही थी इस बात को, बट ये समझ आ रहा है? हाँ. गोत्र में अब आप पे डिपेंड करता है आप सरनेम क्या चूज करते हो. आप गोत्र का जो है वो आपका सरनेम बना सकते हो. कुछ लोग बंसल बनाते हैं, गर्ग, मित्तल, जो गोत्र है उसी को सरनेम बना दिया. कुछ लोग होते हैं जो अपने जाति को, कास्ट को, वर्ण को अपना सरनेम बना देते हैं. और जैसे फिर मैं टाइटल मिला था ग्रेट ग्रैंडफादर को, फिर बाद में पढ़ के हम ही ने बताया कि हमारा सरनेम शाह क्यों है और अग्रवाल क्यों नहीं है. क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि शाह क्यों लगाते हैं और हम अग्रवाल क्यों नहीं लगाते. आज तक इस बात का जवाब दे रही हूं कि अमित शाह से कोई रिलेशन नहीं है और मैं गुजराती नहीं हूं. एवरीवन आस्क मी, मैं कोई भी लाइव सेशन लेती हूँ, मैम आ रही हो गुजराती. मैं सोच रही एक प्लेकार्ड, जैसे ही सवाल आए, टाइटल मिला था इसलिए, लेकिन हम अग्रवाल हैं. ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट इट्स नॉट सेम. Within that you can have multiple titles. चलो अच्छा हुआ तुमने सवाल पूछ लिया तो बता देती हूँ. सरनेम को लेके फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है. जैसे हो सकता है आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो बट यू डोंट वांट टू टेल द सोसाइटी दैट विच कम्युनिटी, तो लोग सरनेम चेंज कर देते हैं. होता है ना. तो सरनेम को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है, बट गोत्र और जाति को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. अपने मन मर्जी से अपना गोत्र या जाति आप चेंज नहीं कर सकते. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है. बट उसमें भी हमारे पास हैं कुछ प्रैक्टिसेस. हाँ, अब फिर ये क्लास चलती जाएगी. ठीक है, अभी के लिए ये क्लियर हुआ ना? ठीक है. इज दिस वेरी क्लियर? हाँ. यार वो तो अलग चीज है. वी कैन नॉट टॉक अबाउट अनटचेबल्स हियर.
We are talking about the 4 Varn here. यार देखो, एक आपको समझने की जरूरत है, चलो इससे एक बात बताती हूँ। गोत्र सबका है, ये आई कहां से प्रैक्टिस? शुरुआत में एंशियंट टाइम्स में ब्राह्मण्स अपना गोत्र बताया करते थे, क्योंकि उनको ये बताना था कि वो किस ऋषि के वंशज हैं। तो वहां से आया कि लोगों ने गोत्र बताना शुरू किया, और फिर इन ऑर्डर टू शो द सोसाइटी दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ सच noble sage and everything, people start using this. That is the reason. ठीक है? Is this clear for everyone? चलो next आगे बढ़ते हैं। Where were we? गोत्र खत्म हुआ, तो याद है फीचर्स खत्म हो गए। We have discussed everything. Now we'll move to the next. Give the heading. Theories with respect to origin of caste. Theories with respect to origin of caste. किसी ने मुझसे शुरू में पूछा था कि मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, जातीज कैसे इमर्ज करी हैं। अब रिपीट कर देंगे। गिव द हेडिंग थ्योरीज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कास्ट। Just write 2-3 lines and then I'll explain. According to D.N. Mazumdar, there are as many theories of caste as there are the writers. Do you understand this? कोई कुछ भी लिख, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो जितनी मुंह उतनी बातें। तो मतलब कहने का है कि हो सकता है हम कुछ थ्योरीज पढ़ रहे हो, आपको एकदम डिफरेंट वर्जन पता हो हाउ कास्ट हैज इवॉल्व्ड, बट नोबडी कैन नेगेट इट because there are as many theories as there are people to write about the origin of caste. But in 1931, caste census was conducted. And they made reference to 5 theories with respect to origin of caste. The first was divine origin theory. The second was karma and transmigration of soul. Third was occupational theory. Fourth was tribes and religious theory of caste formation. And fifth was Senate exogamy theory. Can we have a question on this? There can be a possibility that you may get a question, that write a short note on different perspectives with respect to the origin of caste. There is a possibility. Now here, there is your choice that which perspective are you writing. Why are we writing this? Because this is to begin with. उसके बाद की जो भी case studies हुई थी, they were post-independence case studies. So that would be taken later. But as of now, we'll talk about theories with respect to the origin of caste. This is the first theory which all of you know. Divine origin theory. Mentioned in Purusukta hymn of Rig Veda.
that Brahma ji once self-destructed himself. From mouth came the Brahmins, from shoulders, arms, it was Kshatriya, from thighs, it was Vaishya, and from feet, it was Shudra. So basically, the original context which is mentioned in your scriptures, earlier there was no mention of untouchables. That is why untouchability as a topic in caste system is studied separately. ये भी एक reason है why it is said that Varna has distorted the reality, because reality talks about untouchables, whereas in Varna system there is no mention of untouchables. Is it making sense for everyone? Is it clear? ठीक है. Now this पुरुष सूक्त हाइम की जो बात करी थी, ये कहा जाता था कि एक symbolic version है, but through this fourfold classification, the objective was to ensure a proper order and economic cooperation in the society. But this was criticized by Louis de Moore. Louis de Moore said it is nothing but a mythological justification and not a historical fact. But ऐसा Louis de Moore ने कहा था, हम नहीं कह रहे. Is this very clear for everyone? ठीक है. Similarly, दूसरी थ्योरी थी, ये भी सुना होगा, कर्मा and transmigration of soul. It is said, if I am born into this caste, that's because of my karma in previous incarnation. If I have done virtuous deeds, good karma, then I have accumulated all the good deeds. And because of that, I will be born into a upper caste. But let us suppose in my past incarnation, I have done sin, I have committed sinful acts. So as a result of it, I will be born into a lower caste. And because of that, I have to accept, let us say I'm born into a lower caste, I have to accept this as a result of my past deeds. And then when I fulfill the duties of the caste, it would be like performing my dharma. And as a result, in the next incarnation, I will be born into upper caste. This is nothing but karma and transmigration of soul, जिसको outrightly reject कर दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. उन्होंने कहा आप जस्टिफाई कर रहे हो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. You are treating it as retribution of past karma for which there is no respite. Is that very clear? And that is the reason for many years the lower caste never, how should I say, resisted the discrimination which was happening, because it was made to understand by them that this is the result of your actions only of past karma. So you can't question this. वो तो later when the educated community emerged, they started questioning. अब लगाओ marks, subjective realization of objective reality. True consciousness was developed, the false consciousness was replaced, which resulted into collective mobilization and which resulted or created grounds for various protests and movements in the society. Is it making sense for everyone? Is it clear? The third is occupational theory. It was put forward by Nesfield. Nesfield says that it is the occupation which has led to the development of caste. तो उनसे पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने समझाया. उन्होंने कहा कि पहले ऐसा थोड़ी ना होता था कि सिर्फ ब्राह्मण्स होते थे जो प्रीस्ट का काम करते थे या जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिचुअल्स हैं ये बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए. Not everybody would having that kind of skill to participate in this ritual. So out of all the lot, there emerged a certain section which took on the responsibility of performing the priestly duties, and everyone else thought this is such a knowledgeable work, learning work, the person is making so much of sacrifices. As a result, the person was given a higher status in the society, and slowly and gradually occupation based caste groups started emerging over a period of time. So who said this? Is it making sense for everyone? So now first three theories are clear. पहले ये लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. Give the heading. यार ये buffering ही हो रही है. Give the heading divine origin theory. Divine origin theory. Many religious scriptures advocate the divine origin of the caste system.
advocate the divine origin of the caste system. Full stop. The Puru Suktaim of Rig Veda Purusukta, Purusuktaim, HYMN, Purusukt, और अलग वर्ड लिखो, Purusuktaim, HYMN, Purusuktaim of Rig Veda describes the caste system originating when Brahmaji self-destructed, when Brahmaji self-destructed himself and created four varn, Brahmins from the mouth, Kshatriya from arms, Vaishya from thighs, and Shudra from feet, Full stop. Change and write. It was asserted that different caste emerged due to, 2 points लिखेंगे, due to, first point, intercaste union, and second, degradation due to non-observance of sacred rites, Just hold. ये दोनों पॉइंट्स हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि if intercaste marriage happens, or let us say you are not performing the rituals as they should be performed, so that case also a different caste group is created. So ideally to there were 4 varn, but from there different jatis emerge. One of the reason could be intercaste union, and second could be that you are not observing those rituals as they should have been observed. Is this clear? तो हमने 2 ही points लिखे हैं, but do you understand the theory? और ये कैसे होगा? वो कह रहे हैं पूरी थ्योरी फिर एक काम कर सकते हैं गाइस, पूरा तो डिक्टेट नहीं हो पाएगा. वी कैन आस्क द कोऑर्डिनेटर सर, ही विल paste that here, or leave that much portion and we can refer to the synopsis which is provided. That can be done, but I know this is very annoying, and we have already conveyed to the technical team. They are working on it, but I don't know what is the issue which is happening today. हाँ बच्चे यही बता रही हूँ स्नेहा, हाउ टू कंप्लीट द नोट्स. यू विल कंप्लीट द नोट्स. आई विल आस्क सर on your response portal only. He will paste the notes which I'm dictating, A, and second you have access to synopsis. ठीक है? नोट्स क्यों इनकम्प्लीट? थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होते ही ना नोट्स पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है? नेक्स्ट, हमने क्रिटिसिज्म नहीं लिखा है ना? हाँ, राइट डाउन.
This was criticized by Louis Dumont. This was criticized by Louis Dumont as a mythological justification, rather than a historical fact, rather than historical fact, rather than a historical fact. Full stop. रुक जाते, बहुत गुस्सा हो रहे. So the last thing that we wrote was Louis Dumont, right? We have written the criticism, not a historical fact, but a mythological justification. Write the second. Theory of karma and transmigration. Theory of karma and transmigration. Theory of karma and transmigration. Another perspective on caste is based on concept of karma, and transmigration of soul, full stop. According to this belief, first point, individuals are born into higher or lower caste, depending on their past karma. Higher or lower caste, depending on their past karma. Second point, if a person performs virtuous deeds, they are reborn into a higher caste. And third point, if they commit sinful acts, they may be born as lower caste individuals. Change and write. It is based on the belief that birth in a particular caste is the retribution of past karma, for which there is no respite. Full stop. It was criticized by Dr. B.R. Ambedkar. As, inverted commas, it was a justification for caste discrimination.
It was a justification for caste discrimination. Clear hai? Third theory, occupational theory. Occupational theory. Occupational theory. Nesfield proposed that occupation was the primary factor in the development of the caste system. Was the primary factor in the development of the caste system. Full stop. Initially, priesthood was not exclusive to Brahmins. Initially, priesthood was not exclusive to Brahmins. Was not exclusive to Brahmins, but as rituals became complex, a specialized group emerged as Brahmins. A specialized group emerged as Brahmins. Specialized group emerged as Brahmins, and over the time, occupation became hereditary. Over the time, occupation became hereditary. Clear hai? But this was also criticized क्योंकि कहीं पर भी नेस्फील्ड ने ये नहीं बोला some occupations are more pure as compared to others. Some occupation has better status as compared to others. So Dipankar Gupta highlighted this and said that your theory does not account for occupational hierarchy in the society. So write down. It was criticized by Dipankar Gupta. It was criticized by Dipankar Gupta as this theory fails to explain caste hierarchy. As this theory fails to explain caste hierarchy. Now just hold. We are just talking about the theories which were given to us with respect to origin of caste. From the next lecture, when I'll start with the perspectives, then we will get to know that how our perception in the society about the caste system has developed. तो अभी तो हम in general बात कर रहे हैं that what are the different theories or versions with respect to the origin of caste. तो इसी में एक और version है. First let's listen. Tribes and the religious version of caste formation. तो ये माना जाता है, रिजले ने दिया है, तो ये माना जाता है कि there are many lower caste which has emerged in our caste hierarchy and mostly they consist of the tribals. So then आया that how come tribals became the part of the caste system? So it was believed over a period of time due to different mechanisms that tribes got integrated in our Hindu system, and when they got integrated mostly they got confined at the level of lower caste. तो इससे दो चीजें हुई, एक तो वो कास्ट इमर्ज करी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया और उसी के थ्रू और कास्ट फॉर्म होती गई. लेट मी गिव यू एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन. उन्होंने कहा 4 मैकेनिज्म थे. पहला मैकेनिज्म था सोशल मोबिलिटी. यूजुअली एक परसेप्शन है ट्राइब्स आर होमोजेनस, बट ट्राइब्स वर नेवर homogeneous. Let us suppose this is a tribal group. It got access to land. Let us say it got access to wealth. It got access to power. Now, once their secular status improved,
Now they wanted to improve their ritual status. So as a result, they adopted the cultural ritual practices of the upper caste in order to improve their status. For example, Gond community of central India. उनको लैंड मिली, सेक्युलर हायरार्की में पोजीशन इंप्रूव करी, अब उन्हें रिचुअल स्टेटस इंप्रूव करना था, उन्होंने राजपूत रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड क्लेमिंग क्षत्रिय स्टेटस. Did you get the point? Similarly, Odisha में भूयाज, they also acquired land, their secular status improved, they started practicing the rituals of the Hindu community, and as a result they tried to integrate in the Hindu community. So there was emergence of caste. तो कैसे ट्राइब्स इंटीग्रेट हुए कास्ट सिस्टम में? थ्रू सोशल मोबिलिटी. और सोशल मोबिलिटी कैसे हुई? बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, वेल्थ और पावर. इज दैट क्लियर? फिर दूसरा तरीका रिजले ने बताया. Risley said religious conversion. Have you heard that no religion is homogeneous? There is diversity among the religion with respect to sect, with respect to cult. तो हिंदुइज्म में कौन से सेक्ट सुने? Vaishnavites, Shaivites. So can I say Vaishnavism, Shaivism? So there were many tribal communities which got converted and became the part of these sects. And when they became the part of these sects, they started adopting the rituals and practices. And slowly and gradually, over a period of time, they got integrated in the Hindu caste system. Is it making sense for everyone? तो फिर उन्होंने पूछा कि और भी कोई तरीका था. पहले दो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर एक साथ सारा लिखना पड़ता है. Give the heading tribes and religious theory of caste formation. Tribes and religious theory of caste formation. It was put forward by Risley. Who identified 4 ways through which tribals got integrated in Hindu caste system. First, social mobility via land and power. Social mobility via land and power. Within that, right? Influential tribal leaders gained wealth. Influential tribal leaders gained wealth, land, and power, which allowed them to assimilate into higher caste. Which allowed them to assimilate into higher caste. एक बार ये एक्टिव करना स्टूडेंट पोर्टल. Higher caste. For example, Gonds of Central India acquired large land holdings, comma, adopted Rajput customs,
and began identifying as Kshatriya. Began identifying as Kshatriya. Clear है? क्या क्या रिपीट कर दूं एग्जाम्पल डिक्टेशन पार्ट अच्छा ओके फॉर एग्जाम्पल गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया Gonds of central India acquired large land holdings, comma, adopted Rajput customs and began identifying as Kshatriya. इस ऑब्जर्वेशन को एक बार और कोट करूंगी जब एम.एन. श्रीनिवास पढ़ेंगे. M.N. Srinivas has talked about a concept which I guess you guys also mentioned in the very first lecture, Sanskritization, where it was believed that lower caste, in order to improve their status on ritual hierarchy, they copy the customs of upper caste. M.N. Srinivas का observation था कि पहले अगर आप अपना status secular hierarchy पे improve कर लेते हो ना, then improving your status on ritual hierarchy is still possible. बट अगर सेक्युलर हायरार्की पे इंप्रूवमेंट नहीं है देन रिचुअल हायरार्की पे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. द एग्जाम्पल कुड बी गोंड्स कि पहले इन्होंने वेल्थ अक्वायर करी, पावर अक्वायर करा, फिर राजपूत कस्टम्स अडॉप्ट करके अपने आप का स्टेटस, क्षत्रिय स्टेटस क्लेम करा. इज इट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. रिलीजियस कन्वर्जन. रिलीजियस कन्वर्जन, when you refer to religious scriptures, does it mean any specific religion? हाँ यार, अभी हम हिंदुइज्म की ही बात कर रहे हैं. If you remember in the flowchart I told you, caste outside Hinduism and caste outside India is a separate document. So if currently we are talking about caste system, it is very specific to a particular religion. ठीक है? Right on. Religious conversion and adoption of Hindu identity. Entire group converted to Hindu sects, comma, abandoned their tribal names, abandoned their tribal names, abandoned, छोड़ दिया, abandoned their tribal names and were accepted as Hindu caste. And were accepted as Hindu caste. For example, Meenas of Rajasthan, for example, Meenas of Rajasthan, a powerful tribal group gradually adopted Vaishnavism and assimilated into Hindu society. Just hold. When I'll teach you tribes, then I'll make a reference to G.S. Ghure, who said tribes were nothing but backward Hindus. So then G.S. Ghure said there were some tribes which got completely Hinduized. There were some tribes which got partially Hinduized. And there were some tribes which are still isolated. Completely Hinduized. Example? Partially Hinduized. Abhi dungi. Next point. And then you have Centinelese. Did you get the point? Centinelese. The absolutely isolated tribes where existence is also endangered. So did you get the point? Is this clear? तो कैसे हिंदू सिस्टम में आए? एक पॉइंट क्या हुआ? कंप्लीट हिंदुआइजेशन, रिलीजियस कन्वर्जन. अब नेक्स्ट पॉइंट संथल्स का दूंगी
कि कैसे ये पार्शियल हिंदुआइजेशन हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? ये ट्राइबल आइडेंटिटी तो वही रहने देते हैं, ट्राइबल नाम भी वही रहने देते हैं, बट कुछ ऐसे हिंदू कस्टम्स है जिनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये पार्शियल हिंदुआइजेशन हो गया। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तभी कहते हैं देयर एग्जिस्ट ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम। इसीलिए पहले कास्ट पढ़ते हैं, फिर ट्राइब्स पढ़ते हैं, फिर दोनों के बीच का कॉन्टिनम पढ़ते हैं कि अगर ट्राइब पूरी एसिमिलेट हो रही है, पार्शियली एसिमिलेट हो रही है, तो ट्राइब और कास्ट के बीच का रिलेशन दिख रहा है। एज सिंपल एज दैट। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, formation of new caste, formation of new caste within Hindu society, formation of new caste within Hindu society, formation of new caste within Hindu society. Third point hai, if you remember in the very first lecture I gave you the example of Rajbanshi tribe who carried out the movement prior to independence, wanted to get themselves registered as Kshatriya. तो new identity form हुई ना, तो Rajbanshis were claiming Kshatriya status, a new caste. वो बात अलग है, now they are demanding ST status. But उस टाइम पे एक नई कास्ट तो इमर्ज हुई ना, राजवंशी. Similarly, there is another example, Kurmis. It is said that Kurmi was an agricultural tribe which later claimed the status within the Hindu caste system. Examples, this is how it has emerged. So write down. Emergence of, क्या नहीं, heading क्या डाली है हमने? Formation of, इसी में लिखो. Some tribes joined Hindu society. Some tribes joined Hindu society under new caste names. Under new caste names. For example, Rajbanshis of Bengal, once a tribal community, now claims Kshatriya lineage, and have their own caste identity. क्लियर है जी? हमने 3 रीजंस लिखे हैं ना, चौथा लिखो. Gradual assimilation without changing the tribal name. Gradual assimilation without changing tribal name. मतलब नाम अपना ट्राइबल जो आइडेंटिटी थी वही रखी, बट हिंदू कस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया, तभी कहते हैं पार्शियली हिंदुआइज्ड. फॉर एग्जांपल संथल्स, फॉर एग्जांपल भूमिज ट्राइब. सो दे हैव मेंटेन्ड देयर ट्राइबल आइडेंटिटी, बट जो कंप्लीटली हिंदुआइज्ड है, they have adopted the identity of Hindu. Is that clear? So write down. क्या हम ये बात समझते हैं कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इस पे मेरा कोई भी योगदान नहीं है? तो अगर हम कोई सिवाय पढ़ाने के, आई एम ओनली पढ़ाओइंग यू, रेस्ट एवरीथिंग रिजले का पर्सपेक्टिव है, नहीं तो जीएस घूरे का है. तो अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप जानिए, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं. ठीक, लिखो. हमने कोई भी पॉइंट लिखा है? नहीं, जस्ट ग्रेजुअल असिमिलेशन वाली हेडिंग दी है ना. सम ट्राइब्स retained their name, but gradually
gradually adopted Hindu customs, such as idol worship, and employing Brahmin priest. For example, Bhumij of Bengal, comma, Santals, etc., have increasingly adopted Hindu rituals, and are moving towards caste-like structures. Clear hai? So total we have talked about 4 theories with respect to origin of caste. We'll take the 5th one, Senard theory of exogamy. ये मैं पहले explain कर चुकी हूँ. हाँ जी. क्या है यार point number 2 and 3? हाँ, दोनों में फर्क है. Point number 1 नहीं, तुमने 2 and 3 or 2 and 4? 2 and 3. 2 was religious conversion and what was 3? हाँ. Here they have not converted themselves in the third. They are claiming the lineage that हम उनके descendants हैं. So they are basically talking in terms of that we are descendant of so and so lineage, and that is why we belong to this particular community. That does not mean that they have give up on their traditional customs and practices. But in second point, which is talking about religious conversion, you have completely Hinduized. You have completely given up on your customs and practices. You have adopted their ritual. This is a perfect example of assimilation. देख, दो चीजें होती है, एक assimilation होता है, एक integration होता है. Assimilation मतलब you have completely given up on your unique identity and practices. Integration मतलब I am a part of your culture, but that does not mean I have given up on my culture. So that is the difference. ठीक है? Is this clear? ठीक है, पांचवा लिखो. Senat's exo कहाँ गया? हाँ 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 हाँ. That's what I. If you remember the first पूरे पढ़ाई का first line, caste is a system of social stratification consisting of hierarchically arranged closed endogamous strata where membership is ascriptive, contact is restricted, and mobility is theoretically impossible. That means practically it is happening. देख ले, हो रहा है, रोज प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना एग्जांपल देके. तो theoretically it is impossible. Give me 5 minutes, इस पे एक कहानी बता. ठीक है, ये खत्म कर लूं आज का पॉइंट, फिर मैं उस बात को आंसर करती हूं. Senard's exogamy theory of caste system. Senard हमने शुरू में लिखा था ना शायद, पांचवा पॉइंट. Senard's exogamy theory of caste system. It was argued that exogamy was the main factor in caste formation. Exogamy was the main factor in caste formation. Full stop. He viewed caste as an extension.
he viewed caste as an extension of ancient Aryan traditions shaped by, अभी समझा रही हूं, shaped by social restrictions, such as gotra exogamy, comma, pollution by touch, remember separation of contact, है ना, pollution by touch, comma, commensality, अगर याद आ रहा हो, restrictions on interdining rules, food exchange, so commensality. I'll explain everything. लिख लो बस, एक last point लिखो. Risley supported this 3 पॉइंट लिखे ना, गोत्र एक्सोगेमी, कॉमा, पोल्यूशन बाय टच, कॉमा, कॉमनसैलिटी, फुल स्टॉप, और फिर चेंज करके पॉइंट लिखो. रिजले सपोर्टेड दिस स्टेटिंग Aryans avoided intermarriage but could not prevent it. Aryans avoided intermarriage but could not prevent it, leading to gradual caste divisions. Now let me just explain this point first. Now listen, don't make anything and don't write. Risley is known for the racial theory of caste. सिर्फ सुनना. रिजले कहते थे कि एक रीजन है कास्ट का कि हम सब we are racially different, and दूसरा what we practice is endogamy. So Risley said that let us suppose these were the Aryans. These Aryans decided to migrate to our society and they came from Persia. So when they met our own inhabitant population, who for them was nothing but non-Aryans, they found that they are racially and culturally different. तो जब आर्यंस पर्शिया से आए, ऐसा रिजले कहते थे, तो when they interacted with the non-Aryans, the local habitants of our society, they found that we are racially and culturally very different. These Aryans wanted to maintain their ritual superiority. As a result, what they practiced was endogamy. What they practiced was separation of contact. What they practiced was commensality. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, that along with endogamy we also practice गोत्र एक्सोगेमी. अब आप पूछो मैम वहां पे भी गोत्र थे, तो बेटा उसको हम क्लैन एक्सोगेमी बोल सकते हैं. एंड दैट वाज द रीजन दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर intercaste marriage. And in this intercaste marriage they allowed what was hypergamy, that is anuloma, but what they absolutely not allowed was pratiloma. But I have already discussed that even in case of anuloma, the offsprings will acquire a lower status, and because of this it led to the emergence of different caste groups. कहानी समझ में आई? अब आप कहोगे मैम शुरू तो आपने सेनाट से किया था,
आ गई यहाँ पर रिजले पर, क्योंकि सिनाट का एक ही पॉइंट था कि इस एक्सोगेमी की वजह से पीपल हैड टू गो फॉर hypergamy, and this hypergamy created more caste groups. So over a period of time, जब आर्यंस आए थे तो पर्शिया में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, दैट वाज प्रीस्टहुड, वॉरियर्स, कल्टीवेटर्स एंड रिजले ने कहा कुछ ऐसा ही रेप्लिकेट हो गया। इज दिस वेरी क्लियर? तो बने तो शुरू में वर्ण ही थे, लेकिन गोत्र एक्सोगेमी होने की वजह से और हाइपरगेमी होने की वजह से these वर्ण led to the emergence of multiple caste groups. So this is also one of the theory of emergence of caste. Is it making sense for everyone? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। एक लास्ट थोड़ा सा लिखना है, आई जस्ट डोंट वांट टू लीव इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं पर्सपेक्टिव स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो एक हेडिंग डाल दो, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट बाय रिजले, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट बाय रिजले। नहीं यार, 6th वन नहीं है, पर क्योंकि यहां मेंशन कर दिया है ना, सो रेशियल सेपरेट है, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट बाय रिजले। See, even if I get a 10 marker, still I can write it like this. Racial theory was proposed by Herbert Risley. Second, what was the premise of this theory? The premise of this theory was A, racial differences along with endogamous marriages led to the origin and evolution of caste system. Explanation. Migrated and interacted with non-Aryans who were racially and culturally distinct. In order to maintain the ritual superiority, Aryans practiced social restrictions. For example, endogamy, separation of contact, and commensality. Just hold. अगर क्वेश्चन भी आ जाए, क्रिटिकली एग्जामिन रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, the visibility of the content increases. That there are multiple theories with respect to the origin of caste, one of them being racial theory proposed by Herbert Risley. Then you can start in the body what is the
premise of the theory, what is the explanation, अभी और लिख रहे हैं, ठीक है. In order to maintain the ritual purity, however, due to clan exogamy, there existed incidences of hypergamy which led to creation of caste groups. इतना लिखो फिर और लिखेंगे. Aryans migrated, interacted with non-Aryans who they found to be culturally and racially distinct. So Aryans, in order to maintain their ritual superiority, practiced social restrictions, for example, endogamy, separation of contact, and commensality. However, due to strict clan exogamy, there existed incidences of hypergamy, which led to the creation of caste groups. इतना लिखा. अब हम एविडेंस किस बात का दे रहे हैं? इन्होंने पहली चीज किस बात से शुरू करी? रेशियल डिफरेंस. तो हम इस बात का एविडेंस दे रहे हैं कि उस टाइम पे लोगों को लगता था दैट वी आर रेशियली डिफरेंट. कैसे लगता था? Many said that Varna means color. So it was believed that people from different Varna were actually people of different color. And there was a reference also made that even in Mahabharata it is mentioned that Brahmins were white, Kshatriya were red, Vaishya were yellow, and Shudra were black. So based on that, they assumed that Varna means color, and since we were different, so can you see the racial difference? Isko obviously negate bhi kiya tha, but that is what the evidence that they gave. Another evidence, nasal index measure kiya tha logon ka. The height of the nose. It was said that people who belong to the upper caste have narrow nose, and people who belong to the lower caste have broad nose. And then it was found that upper caste people have very similar to Aryan traits, and lower caste people have very similar to non-Aryan traits. So basically, they were trying to justify this caste theory based on race. Is that clear? So evidence mein likh lo. Varna is equal to color. It has a reference in Mahabharata. It has a reference in Mahabharata where Brahmins were white, Kshatriya red, Vaishya yellow, and Shudra black. Shudra black. यहीं पे इसका क्रिटिसिज्म दे दो. इरावती कार्वे ने वहीं पे क्रिटिसाइज कर दिया था कि वर्ण मींस क्लास होता है, कलर नहीं. तो यहीं लिख दो. उसका रीजन है, बाद में लिखवाऊंगी, मुझे भी याद नहीं रहा तो यहीं लिख दो. This was criticized by Iravati Karve, anthropologist थी. Iravati Karve that Varna originally meant class. Varna originally meant class. The association with skin color was later interpretation. Association with skin color was later interpretation. Association with color
this was criticized by Iravati Karve, who said Varna initially meant class, and this association with skin color was later interpretation. क्लियर है? तो हमने एविडेंस कर दिया, अब स्कॉलरली सपोर्ट लिख लेते हैं. एक स्कॉलरली सपोर्ट, 3 लोगों ने सपोर्ट किया था, घूरे, मजुमदार और क्रोइबर. और इसको क्रिटिसाइज भी बहुत लोगों ने किया था, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लिखेंगे, रोमिला थापर. स्कॉलरली सपोर्ट, घूरे, एक एक लाइन में लिखो. घूरे, जीएस घूरे, गोविंद सदाशिव घूरे, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं. तो घूरे का लिखेंगे, वो बात अलग है, हम सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद फादर को पढ़ेंगे. उसका रीजन है, इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे कि जब फिर घूरे पढ़ाऊंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस. सो घूरे में लिखेंगे, डिस्क्राइब्ड कास्ट सिस्टम as a Brahminical system, described caste system as a Brahminical system, and believes that the conquered non-Aryans believed that the conquered non-Aryans became Shudra and was debarred and were debarred from religious and social activities of Aryan, and were debarred from religious and social activities of the Aryans. Clear? Next, Mazumdar. He believed that clash of culture and contact of races led to the social groupings. He believed clash of culture and contact of races led to the social groupings. Third, Kreuber supported Risley's theory, but argued that other factors also played important role. For example, religious, cultural, occupational, etc. क्लियर है? बस एक लास्ट लिखेंगे, थापर, रोमिला थापर. उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो स्कॉलरली सपोर्ट में नहीं लिख देना इनका नाम, क्रिटिक में लिखना, रोमिला थापर. सो फार अभी तक हम ये जो रिजले की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें वो आर्यंस, नॉन आर्यंस, उनका इंटरैक्शन, ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कहीं पे भी ये कहा कि ये सही थ्योरी है या गलत थ्योरी है? हमने क्या पढ़ा कि रिजले की थ्योरी है, एंड दिस इज द रेशियल थ्योरी और रेशियल रीजन बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ कास्ट.
सो वन ऑफ द स्टूडेंट इज राइटिंग कि ये थ्योरी तो गलत प्रूव हो, हम कभी ये बात कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है? ठीक है ना? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़ा जाता है, ठीक, राइट? अगर वो सपोज करो एग्जाम में आ जाए कि रिजलेस थ्योरी ऑफ रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट, आप क्या लिखोगे? ऑलरेडी प्रूव्ड रॉन्ग, डोंट आस्क द क्वेश्चन। और अगर यूपीएससी कहे कि रिजलेस रेशियल थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, इलैबोरेट। डिस्कस या कमेंट नहीं लिखा है, इलैबोरेट लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको जीएस से समझाती आ रही हूं, यूपीएससी से पंगा नहीं लेना है। वो जैसा पूछे वैसा लिख दो। इंटरव्यू में सवाल पूछ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो और आप सेम पेज पे नहीं हो, सॉरी सर करो और आगे बढ़ो। उस वक्त 190 नंबर चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। और ऐसा थोड़ी ना मैं कोई गलत पढ़ा रही हूँ, पूरा 250 नंबर का एथिक्स का पेपर पढ़ के जाते हो, फिर 15,000 ब्राइब लिख। 15,000 क्यों? लेकिन मुझे समझ नहीं आया उस समय, मुझे इस बात का गुस्सा आना चाहिए था कि अनएथिकल, या मुझे सॉरी फील हो रहा था कि पकड़े भी गए तो 15,000 के लिए। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, अलग वाली बात हो गई। रोमिला थापड़ argues, Romila Thapar argues that caste was originally a social and economic system. Caste was originally a social and economic system, not racial, not racial. और आज हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव पढ़ाना है कास्ट और रेस को लेकर। तो वहां पे हम देखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता, सबने क्रिटिसाइज करा है दैट कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन रेस। और उसका रीजन भी दिया है कि सेम कास्ट में डिफरेंट रेसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन Brahmins. They don't look the same. So within the caste also you have different races. So this has already been discredited theory. But anyway, the theory is important from the examination point of view. यहाँ तक क्लियर है? नहीं रुको, क्वेश्चन तो लिखो आज की क्लास के लिए, चल दिए तुम लोग तो। Critically examine the racial theory. Critically examine the racial theory of caste with respect to Indian society. With respect to Indian society. 10 marker. Another question, right? यार मिल नहीं रहा है, रुको, इंटरनेट नहीं चल रहा है, रुक जाओ। पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2006 या 7 का है, जस्ट राइट। एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। Critically discuss the features of caste system critically discuss the features of caste system along with the factors which are responsible for origin of caste, along with the factors which are responsible for origin of caste. Now just hold, I told you ना कि next class में हम वो workbook style of एक test करेंगे. What I mean by that is that workbook style of test में you don't have to write a 150 word answer. You can write a 30 or 40 word. For example, it starts with what do you mean by caste system?
what are the features of caste system, to what extent caste is different from varna, or let us say to what extent caste is different from race, or what is Jajmani system, what are the factors responsible for disintegration of Jajmani system, and let us say you just have to write 30 words, 40 words, 50 words, or I may ask you to fill the table where a perspective is given, you have to guess the thinker who has given the perspective. So that's not for answer writing, that is basically to ensure you learn. तो कहने का मतलब है कि जो 3 लेक्चर्स हैं ये टिप्स पे याद करके अगली क्लास के लिए आना. नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल आया है. नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल मोस्ट प्रोबेबली इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. तो ट्यूसडे को ये तीनों लेक्चर्स रटे हुए होने चाहिए. क्लास में हाफ एन आवर का वर्कबुक टेस्ट होगा. पहले मैं पढ़ाऊंगी, मैं अपना पूरा पढ़ाऊंगी जो मुझे पढ़ाना है, उसके बाद आप लिखेंगे. सो ये देख लेना कि दूसरा लेक्चर अगर नहीं हो यहाँ पे तो ठीक है ना. सो यू आर गोइंग टू अपीयर, सो रट के आना अच्छे से, ठीक है.